Thank you guys and welcome back to City TV. I am so glad that you are all tuning in today because I am sitting with someone so inspiring, so fabulous. Sheheryar has been inspiring me for as long as I've known him because he is a ball of energy, a ball of sunshine who inspires everyone to do more and more just like he does. Thank you so much for being here. Thank you for having me. Oh my God, I'm loving this introduction. But it is so true and I have been dying to ask you, Sheheryar, what drives you? Sadaf, what drives me is the same thing that I think what drives you. You're insanely unstoppable. I think what drives us is a sense of achievement because we feel happy about it. When you feel happy and you're doing something, it just seems natural. मुझे याद है जब मैं when I was about 17, I've said this story इतनी दफ़ा, I lost my eyesight. I'll pause you there because I do want you to go into the details of this one story because हर कोई अभी आपका success देखता है, they see you meeting people and being all happy, but you've had your journey and I want you to talk about this. You know, I'm glad you asked me to pause on that because a lot of people don't. मैं आपको बताऊं कि my journey started as a single parents child. मेरी माँ ने मुझे सिंगली ना सिर्फ बड़ा किया मगर बड़ी मुश्किलात में बड़ा किया। वो पाकिस्तान छोड़ के गई, हमें बाहर वो काम करती थी। मैं 12 साल की उम्र से आई वाज वर्किंग। 12 साल की उम्र में मेरी पहली जॉब थी। मुझे 12 साल आई वाज वर्किंग इन अ स्कूल लाइब्रेरी एंड 13 साल की उम्र में मैंने फ्लिपिंग बर्गर्स एट अ लोकल बर्गर जॉइंट आई वर्कड। मुझे कभी ये नहीं बताया गया था कि काम नहीं करना, और काम करने का ना सिर्फ एक बहुत ज़रूरी था बिकॉज ऑब्वियसली टू सर्वाइव, मगर एक सेंस ऑफ प्राइड थी हमारे घर में भी कि डजंट मैटर इफ यू आर वर्किंग। आई नेवर फेल्ड। इफ एनीथिंग आई वाज एन ऑनर स्टूडेंट ऑलवेज। पढ़ने का मुझे शौक था मगर उसके साथ साथ अपनी अम्मी को प्राउड करने का बहुत शौक था। लाइक आई रियली वांटेड टू मेक हर प्राउड ऑफ मी। मगर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जब हर चीज़ हो रही थी, हेड बॉय बन गया, प्रेसिडेंट ऑफ डिबेट्स, प्रेसिडेंट ऑफ ड्रामेटिक्स, अचीवमेंट करने का बहुत शौक था बचपन से, ये मैं नहीं होगा नहीं था। 17 वापस आ रहा था स्कूल, एक्चुअली खाना लेके सब दोस्तों के लिए, रोज़ों का वक्त था और मेरा खुद रोज़ा था उस वक्त, और इफ्तारी का वक्त था और बारिश हो रही थी। बारिश में क्या हुआ कि ये वो सर्दियों का मौसम, आपको याद है कितनी फॉग हुआ करती है और अभी भी होती है। बारिश में ना सिर्फ फॉग थी मगर हमारा एक फॉग, बारिश की वजह से गाड़ी की सारे शीशे थे वो फॉग अप हो गए। We swerved off the road. Long story short, I went through the windscreen. I lost my eyesight. मैं 1.5 साल काफ़ी देर I couldn't see anything. For 2 years you couldn't see anything? I couldn't see anything for a good year. उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ लाल देख सकता था, लाल रंग, और जो किसी ने लाल रंग पहना होता था या कोई लाल कोई चीज़ मेरे आगे आती थी, मुझे वो नज़र आती थी। और क्यों, इसलिए मैं आपने नोट किया मेरी सारी कलेक्शंस के अंदर रेड बहुत होता है, the HSY red. For me, red is the color of life, the color of joy, the color of existence, the color of sound and sight coming together. एक खुशी का रंग है। But Sheheryar, did it not just completely shake you up, this ambitious, boy who's getting things right, finally getting on track and everything comes? It's not shake up, Sadaf. It stopped. Life stopped. हर चीज़ रुक गई थी, कुछ नहीं था। मुझे एक आपको एहसास नहीं होता कि अल्लाह ने क्या क्या चीज़ आपको दी हुई, क्या क्या नेमतें हैं आपके पास, मगर मेरी ज़िंदगी तो वो रुक गई थी, कम्प्लीटली स्टॉप, बिकॉज मुझे लगा कि इतनी मुश्किल से मैंने यहाँ तक आया हूँ। ये एक चैम्पियन होना दूसरे लोगों का नहीं, अपने लिए क्या चैम्पियन होना बड़ी मुश्किल बात थी। और उन ज़माने में एक से 17 साल के बच्चे के लिए क्या चैम्पियंस होती है? आप स्कूल में टॉप कर रहे हैं, आप हाई स्कूल के हेड हैं, ये है वो है, ये होता है ना चैम्पियन बनना। हर चीज़ रुक गई थी। मुझे याद है मेरे कान मेरे इतने तेज़ हो गए थे कि मुझे अपनी माँ की रोने की आवाज़ 4 कमरे दूर आ जाती थी। मेरे कुछ दोस्त सारे अच्छे थे, मैं सबको नहीं कहूँगा, पर कुछ लोग मुझे प्यार से फ्रैंकनस्टाइन कहना शुरू हो गए थे बिकॉज मेरे मुंह के ऊपर 400 से ज़्यादा स्टिचेस थे। वो कहते थे फ्रैंकी को मिलना है, 5 मिनट गुजारेंगे। मेरा दिल टूटता था, मैं बहुत अपसेट था, मैं टूटा हुआ इंसान था। जब वापस साइट आई तो मैंने अपनी माँ को कहा कि मैं जानता हूँ कि आप मैं चाहती हैं कि मैं लॉयर बनूँ, मेरे वालिद साहब चाहते थे कि वो पॉलिटिशियन है, मैं पॉलिटिशियन बनूँ। हर बंदे का एक शौक था कि हसन कुछ बड़े होकर ये बनेगा। मैंने कहा माँ, मैं बड़े होकर खुश होना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं बनना चाहता, मैं खुश होना चाहता हूँ, और मुझे खुशी मेरी जो है वो उसको मुझे ढूंढना है। तो आप मुझे खुश होने का मौका दें। मैंने, अल्लाह ने मुझे वापस ज़िंदगी है तो कोई मकसद होगा इसका। कमिंग बैक टू, तुम कहती हो कि व्हाट ड्राइव्स मी, खुशी। मैं जब भी काम करता हूँ, मुझे अचीवमेंट नहीं होती कि लोग मेरी तालियों में जाएं। लोगों की मुझे आजकल लोग मुझसे पूछते हैं 24 साल में आपने क्या कमाया? मैंने पैसा कमाया नहीं कमाया मैं जानता नहीं हूँ, मैंने फेम कमाया नहीं कमाया नहीं जानता, मैंने लोगों की इज्जत कमाई है, और मैंने इज्जत, मुझे लोग इज्जत करते हैं, और मैंने खुशी कमाई है। मैं हर रोज़, आज भी तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, तुम मेरे साथ बैठी हुई हो, मैं अपने घर में हूँ। So that's one thing that I always know about Sheheryar. I have never met him pulled down or stressed or angry. It's always like, hi, how are you? And as soon as he
he enters the room, there's this energy to you. I guess ये एनर्जी तब ज़्यादा आई जब मैंने दुनिया वापस देखी. मुझे लगा कि नथिंग इज दैट बैड. हियरिंग गई, क्या हुआ? आई साइट क्या हुआ? काम करना पड़ा, सो क्या हुआ? मैंने अपनी बिजनेस भी शुरू की. कुछ मैंने खुशी से शुरू की. मुझे याद है मैं स्कूल जा रहा था, साथ मेरी 4 जॉब्स हुआ करती थी फैशन स्कूल में. लोग समझते थे कि हसन का मेंटल कोई प्रॉब्लम है, हर वक्त मैं झूमता रहता था. मैं एक्चुअली काम करता था मगर मैं काम करता था एक लेदर कंपनी के लिए. जब मैं ग्लू लगाता था, ग्लू से मैं लेदर जोड़ता था पूरी रात, और मैं उसी फ्यूम को सूंघते हुए आता था स्कूल. मैंने जब वैलेडिक्टोरियन की स्पीच दी थी माइन के साथ, मुझे उल्टियाँ आ रही थी और लोग कहते हैं ज़रूर कोई चक्कर है. वो ये नहीं जानते थे कि मैं पूरी रात काम करके ग्लू से लेदर जोड़ के आया हूँ, जिसकी वजह से मुझे उल्टी आ रही हैं. मुझे काम से कभी डर नहीं था. मगर मैं never really shown this side of you, right? You kind of keep it private, and then I can see that now you're more open about it because you clearly want people to learn from it. I want people not to learn from it from the older people because I think they've given me the love and respect. मैं चाहता हूँ कि हमारी जो लोग, हमारे जो इस वक्त पाकिस्तानी हैं, बड़ी छोटी उम्र के पाकिस्तानी हैं. हम over 50% of our population is under the age of 35, if I'm getting the numbers right. ये हमारी मिलेनियल नेशन है जिसको उठ के काम करना है. और वो सब समझते हैं कि जब तक आपके पास बड़ा लास्ट नेम ना हो, आपका प्यो कुछ ना कर रहा हो, आपको किसी ने पैसे ना दिए हो, आप कुछ कर नहीं सकते. यार मैं समझता हूँ कि अगर ये मैं स्टोरी आज नहीं बताऊंगा तो मैं कब बताऊंगा, इनको फ़ायदा कब होगा. हर बंदा कुछ कर सकता है. पाकिस्तान में मैंने नाम बनाया, पाकिस्तान में मैं HSY बना, एक वालदा की मेहनत की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ. You are not just my friend, but you're also family. You know how it works in our family. कभी मैंने कभी किसी से कुछ लिया नहीं, कभी मांगा नहीं, मगर मैं इसलिए प्राउड हूँ अपने बारे में, क्योंकि मैंने खुशी से काम किया. आज ये जो आपके बच्चे देख रहे हैं, you have such a fan following. इतने लोग आपको देखते हैं, they're inspired by your work. I want them to be inspired by the fact that anything is possible. So that's one thing to note, guys, because I think बहुत आसानी से एक बंदा किसी की जर्नी को for granted ले लेता है और समझता है कि बस अगर अभी जो दिख रहा है वो ऐसा ही था. So here sitting with me is a completely self-made guy and the king of couture in Pakistan as we know today, who's on his 24th year of his fashion journey. But before that, how did the fashion journey start? From your mother wanting you to be a lawyer and your father wanting you to be a politician, and you ending up in fashion. 23rd मार्च को शो था, मगर मैं 1st मार्च को 1994 में क्या हुआ कि मैंने जब आंखें वापस आ गई, सब स्टिचेस हर का दाग ही दाग, निशान ही चाहते, 400 से ज़्यादा स्टिचेस थे. तो मैंने सोचा कि मैं किस तरह अपने आप को वापस कॉन्फिडेंस लेके आऊँ. तो मेरी बहन जो थी वो उस वक्त फैशन का नया शौक था. अफशा भी ग्रेजुएट करके आई थी कॉलेज से, वो किसी शो में हिस्सा ले रही थी. मैंने कहा हाँ मुझे शोज़ का करने का बहुत शौक है, मगर मुझे तो कोई सीरियसली नहीं करी. तो मैं वहाँ पहुँच गया. मैंने कहा जी मैंने भी ऑडिशन करना है. अच्छा मैं बताता हूँ कहाँ सब डिज़ाइनर वगैरह करते हैं, मुझे देख के करते ताकि इस तरह हो जाते थे कि ये इतने निशानों के साथ किस तरह करेगा. हमारे रैंप के ऊपर आना है. अच्छा तो किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराया. उन्होंने कहा आप ऐसा करें, आप मेकअप असिस्टेंट बन गए. मुझे तो मेकअप नहीं आता. आप लाइट असिस्टेंट बन जाए. मैंने कहा मुझे लाइटें भी नहीं आती. आप म्यूजिक समझ, मुझे कुछ नहीं आता, मगर मैं हर चीज़ सीखना चाहता हूँ. 23rd मार्च को शो था 1994. डिज़ाइनर थी नीलूफर शाहिद, और उनको मैंने कन्विंस किया कि आप मुझे अपना शो करने दें. और क्या मेरे आइडियाज़ मैंने बताया जी इस तरह होगा, मॉडल दिया लेके इस तरह आएगी, वो इस तरह ये करेगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. नाउ व्हेन आई लुक बैक मुझे शर्म आती है कि कितना गंदा मैंने शो किया, मगर उस वक्त बड़ा बट उस वक्त तो क्या बात थी जी. वहाँ मैंने शुरू किया. आई डिड फैशन. और क्या हुआ कि सब शुरू हो रहा था, मैं आपको बताता हूँ. जब मैं शो कर रहा था, कोने में 2 लड़के खड़े हुए थे, मेरी बहन से बात कर रहे थे. एक के पास कैमरा था, एक बात कर रहा था मेरी बहन से कि हम लोग कुछ करना चाह रहे. एक था अतर, एक था शहजाद. पीछे एक और लड़का था, पोलरॉइड कैमरा लेके खड़ा हुआ था, और उसके साथ 2-3 लड़के थे और एक लड़कियां थी. और वो बिल्कुल कहीं से फैशन नहीं लग रहा था. वो आप लोग बता रहे थे कि नहीं जी मुझसे पूछें, मेरा नाम खाबर रियाज है और मैं काम करना चाहता हूँ और मुझे एक मौका दें. खाबर रियाजा मेरी बहन की दोस्त थी, बहुत अच्छी, उसकी सहेली, और उसके साथ उसकी छोटी बहन थी. एक नाम था विनी, एक का नाम था आयशा, और अफशा एक और अपनी सहेली लेके आई हुई थी जो मॉडलिंग करना चाह रही थी. उसका नाम था आमना हक. हम लोग सारे इस इंडस्ट्री में नए लोग थे और हमें एक जज्बा था कि हमने कुछ करना है. प्लस अनबिलीवेबल मोमेंट. एक लड़की बैठी हुई थी अफशा के साथ, नोट्स बनाया करती थी, जो कुकू खाला के साथ नीलूफर शाह, वो था ZQ. हम लोग सारे इसमें इकट्ठे आए थे एंड हम लोग दोस्त बन गए थे. एक फैमिली हुड थी, एक कमराडरी थी, एक देयर वाज एन अनबिलीवेबल सेंस ऑफ हाउ वी कैन डू एनीथिंग. उसके अंदर आई स्टार्टेड वर्किंग. फिर मेरी वालदा ने मुझे कहा
You know, my mother's an educationalist. She's taught पिछले 50 साल से पढ़ा रही है मेरे. Thank you. I'm very lucky. My mother's amazing. My mom is my zindagi. मेरे नाना भी educationalist थे. You know that my nani, my dadi, your mother, your father, husband's dadi, all related. We're all sisters. They were all into education. You know, we've come from a family education. My mother said to me, "You want to do fashion? You're doing fashion for the last 5 years. डॉक्टर के लिए स्कूल जाना है ना, लॉयर के लिए स्कूल जाना है, इंजीनियर के लिए स्कूल जाना है, फैशन के लिए भी कोई स्कूल होगा, पढ़े बगैर नहीं हो सकता. यू हैव टू गो टू स्कूल." सो आई गॉट इनटू स्कूल, पाकिस्तान स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन है, तब खुला था. माई बिग ब्रेक ऑफ फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ. लोग पूछते हैं कि यार व्हेन डिड यू फील लाइक यू डिड समथिंग. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं शो मारूं. वो आया था जब मुझे याद है मैं स्कूल पे जब गया था तो उन्होंने कहा था कि आप कैसे करेंगे, यू कांट अफोर्ड इट, यू कांट डू दिस, आप पढ़ेंगे किस तरह, बाहर जॉब करने की इजाज़त नहीं है. मैं 4 जॉब्स करता था, किसी को बताता नहीं था. मैंने पेस के ऊपर ब्रिक्स भी उठाई हुई हैं, मैंने स्टोर्स के अंदर चेकआउट बॉय भी बना हुआ, मैंने बैग्स भर के आंटियों की गाड़ी में भी रखे हुए हैं, और आज उसी स्टोर में जाके जाता हूँ, लोग मुझे सलाम करके प्यार देते हैं. मगर मेरे लिए प्राउड मूवमेंट तब था जब मुझे अपने स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बनाया गया. उस स्कूल का जब मैं ग्रेजुएट कितनी मुश्किल से किया, मैं तुम्हें क्या बताऊँ यार. ये इतने मज़े की जर्नी है कि अब 24 साल जो अब आए हैं, अब मैं इसी को मद्देनजर रखते हुए इसको सेलिब्रेट कर रहा हूँ. आई एम नॉट मेकिंग इट अबाउट मी. लोग कहते हैं 24 ईयर्स, 25 पे क्यों नहीं. देखो 25 पे मैंने बड़ा शोर मचाना है. आई एम गोना से HSY, इट्स ऑल अबाउट मी. नो बट दैट्स अमेजिंग राइट, बिकॉज लोग जो हैं वो जो सोच रहे होते हैं वो बोलते नहीं हैं. सो एंड what I love about you is if you're saying I want to celebrate myself, you're like hell yeah, I'm going to celebrate myself. Yes. That's okay. I mean, कोई छुपाने की, पीछे से आने की, लॉबिंग करने की नहीं है भाई, है तो है. Deal with it. You know, you work with everyone in the industry. You know that lobbying can only take you this far. कहते हैं जी मार्केटिंग जीनियस. मैं कहता हूँ मार्केटिंग से दरवाजे पे लोग अंदर आ जाएंगे, मार्केटिंग की वजह से अंदर रहेंगे नहीं. अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा और एक्चुअल जेन्युइन इंटेंशन होगी तो वो प्रोडक्ट लेंगे, वरना वो अंदर बाहर चले जाएंगे. आपका ऑडियंस, आपके देखने वाले लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, वो आएंगे ज़रूर. अगर कोई काम ना लगा तो जाएंगे नहीं. हम चाहते हैं कि वो अब आएँ, और अब उन्होंने काम को इज्जत दी है, अब इस साल दूसरे लोगों पर डेडिकेट करें. हमने नाइट शो किया अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट. मेरी माँ ने मुझे बड़ा किया, मेरी बहन ने. आई एम सच अ बिग बिलीवर इन द पावरमेंट, इन द इक्वालिटी ऑफ वुमेन. फिर मैं मुसाफिरों का अलग कलेक्शन हमने की. दिस वाज अबाउट मिलेनियल्स. And I want to double click on that. So I'm I like just that gonna double take, click. I know, I love my double click. Yes, because the thing is that, and you were just moving very quickly from the night collection. I want you to just pause you there for a second, because it's not just what we see. I know that you're also working with a lot of charities जहाँ पे women empowerment पे काम भी हो रहा है. So it's not कि हम आए, हमने एक शो किया और उससे हमने एक बनाया, फैनफेयर बनाया कि जी ये women empowerment के बारे में और ये cause के बारे में. Clearly there's much more deeper roots to what you're doing and what you believe in terms of women empowerment. I appreciate you highlighting that because it's true. ये एक प्लेटफॉर्म्स हैं, इससे शोर शराबा ज़रूर मचता है, मगर इससे बड़े लोगों के फ़ायदे होते हैं. हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर लेबर एंड लव जो नूरिया इकबाल की चैरिटी है उसके साथ काम किया. We want to be available for anyone who's looking out there. देखिए जी, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म बन चुका है. लोग हमारी आवाज़ सुनते हैं, कपड़े खरीदते हैं, उसके साथ साथ हमारे और किसी को बेहतरी को फ़ायदा हो तो बड़ा ज़रूरी है. ये जो मुसाफिर वाला भी कैंपेन था हमने अभी शुरू किया. बिल्कुल, अभी just saw 23rd March. Yes, absolutely. Yes, 23rd March, absolutely. On my 24th anniversary, we thought 24 years के बाद if we can do anything, why not do it for other people. और हमने नंबर भी 23 मुसाफिर किए हैं. 24th हम ढूंढ रहे हैं amongst the people because मैं समझता हूँ कि हर बंदे के अंदर स्टोरी है. This will give an opportunity for them to step up and give the stories. We use our Instagram, we post pictures, we Photoshop them, we do ये filter, वो filter. And when I ये भी बताता चलूँ, जब लोग लिखते हैं ना no filter, usually it shows. Always have a filter. Me too. Always a filter. Always. Filters are fine. Yes, so filters are not a bad thing. There's nothing to be ashamed of as long what you're doing. You should be happy to admit. Yes, absolutely. Filters लगाए, 4 filter लगाए. मैं तो लिखता हूँ #many filters. हाँ जी, और सच्चाई को next level पे ले गए हैं बिल्कुल. But we are going to come back to
the Musafir campaign. And we're going to talk about millennial Musafirs. You specifically zoned in on young people. Sadaf, dekho, you work in a company and with the people, so many young people. Who are our heroes? Designers, actors, actresses, cricketers. Cricketers, no doubt, wonderful. I'm not उनको put down नहीं कर रहा. We need other musafirs. We need people who are actually doing something. हमारे इस मुसाफिरों में कोई एक ऐसा इंसान है जो बाहर MIT से पढ़ के आया मगर अपने बच्चों को सराइकी और पंजाबी सिखा रहा है. एक ऐसी औरतें जो लॉ पढ़ के आई हुई हैं बाहर से और यहाँ के फ्री प्रो बोनो काम कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए जो डेथ रो पे हैं. KPK में रह के और मैं ये नहीं समझता कि KPK में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं मगर वहाँ आर्ट और कल्चर को पुश करना आराम से हो रहा है. मगर दिस वुमन इज टीचिंग हारमोनियम. एक वो क्या है रैपर एक लड़का है बड़ा मजे का औरतें अच्छी रैप करता है मगर विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी बिग डील एंड कॉन्ट्रैक्ट ही इज स्प्रेडिंग हिज वर्ड आउट एंड ही इज सेइंग व्हाट ही ट्रूली फील्स. These are our musafirs. They're people doing stuff, such incredible stuff. बहुत नोटिस किया. So I went on the Instagram feed और मैं साथ फॉलो कर रही थी क्योंकि वो रिवील होते चले जा रहे थे. And what I noticed was that you'd actually taken the pain to go beyond the obvious. क्योंकि वो obviously 10, 20, 25 लोग तो हम देखते हैं. But you had kind of consciously gone to look for people who were trying different things and you know we don't often hear other people's voices because हम लोग अपने क्लाउड में गुम जाते हैं. मेरी जो टीम जो है जिनके साथ मैंने ऐसा काम किया है जो इवन बच्चे जो हमारी टीम को कभी ज्वाइन करते हैं छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए और मैं सबको कहता हूँ कि आके ज़रूर करें. उनसे क्या होता है कि हमें आवाज़ सुनने को मिलती है. आप कुछ नहीं कर सकते, कामयाबी नहीं हासिल कर सकते जब तक आपकी फिंगर ऑन द पल्स ना हो. ये मैं फैशन के बारे में भी कहूँगा. बहुत से हमारे डिज़ाइनर भाई बहन हैं इस तरह. मुबारक हो आप सबको बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं मगर आपकी फिंगर ऑन द पल्स नहीं है पेरिस पे, न्यूयॉर्क पे नहीं है, मिलान पे नहीं है. आप वो बनने की कोशिश ना करें. एली साहब के कैटलॉग खुदा के लिए रखते हैं. आप फिंगर ऑन द पल्स रखें ऑन पाकिस्तान. हमारी जीत सिर्फ तब होगी. We need to be able to put a finger on the pulse, on the voice, on the sound, on the people and on the energy of Pakistan. That's what I believe in. ये जो मुसाफिर मैंने ढूंढे थे, I went and asked my team कि please पता करो. They told me. मुझे तो हैरानगी होती थी. वाह अच्छा गुजरात में ये हो रहा है. गुजरात में स्टाइलिस्ट है. और बहावलपुर में there's a girl talking about fashion design and law together and there's someone in Sargodha who isn't necessarily only doing business but also doing business and raising funds to feed the poor on the street. इतनी चीज़ें हो रही हैं. ये सारे वो लोग कर रहे हैं जो 30 की उम्र से कम है. हमारे पाकिस्तान के अंदर जितनी पोटेंशियल और जितनी चीज़ें हो रही हैं मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा हैं मगर हमारी नज़र कहाँ है? फिल्म, टेलीविजन और क्रिकेट. the next item number. It's wonderful. It's wonderful. ज़रूर रखें वो एक entertainment है. But there has to be real things that are happening. That and even the celebrities and stars यार हमें kids को पता नहीं होता. There are celebrities out there who speak, put their voice up. मैं मायरा खान को दाद देता हूँ. She goes and stands up against bullying. She says, you know, it's not okay. I even to Urva and Mavra especially. Mavra goes and she is who she is. She doesn't make qualms about it. She is who she is. Fawad Khan will go and rally for her team, but he will India Pakistan को जो भी चीज़ें होती हैं मैं उस पर पॉलिसी पढ़ूंगा मगर वो भी नहीं पढ़ता. They stick to their guns. These are the kind of people you want to look up to. But what they're doing besides acting and doing these things. But ये तो कुछ चंद लोग हैं. What about the people on the street who want to be like someone they can be? ये तो चीज़ें ना ये हमारा बड़ा मजे का मौका है. और ये मुझे ये बहुत अच्छी लगती है आपके बारे में बात बिकॉज शेरू जब भी कोई बात करता है तो यू विल ऑलवेज फाइंड एन एलिमेंट ऑफ पेट्रियटिज्म देयर. वो प्राउड पाकिस्तानी वाला होता है. सो जो कलेक्शंस हैं या जो काम निकलता है या जो रिप्रेजेंटेशन आती है या ट्रैवल होता है यू ऑलवेज सेंस दिस यू नो an ambassador of Pakistan going on. Wow, you know, this is my dream one day for me to be an ambassador of Pakistan. बड़ा मुझे शौक है कि मैं पाकिस्तान को represent करूँ on a political level somewhere because हम सबके पास क्या है एक सबसे बड़ी जीत क्या है कि इस मुल्क ने हमें बनाया और अगर इस मुल्क को हम किसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते तो बहुत ही अच्छा है. ये जो शो मैं कर रहा हूँ आपने मुझे पूछा 24 साल का जो शो है ये भी एक कठोर शो है मगर इसके अंदर भी क्या है हम वो पाकिस्तान के वो टांके इस्तेमाल कर रहे हैं उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं वो काम करने के तरीके और प्लस मेरे 24 साल में जो लोगों ने मेरी मदद की इस शहर ने लाहौर की शहर है मैं आपको बताता चलूँ कि आप लाहौर वाले घर पे इस शहर ने मुझे अपना बेटा बनाया. इसने अपना भाई बनाया. इसने कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसने मेरे लिए मुझे मदद करके हाथ नहीं पकड़ा. मेरा हाथ थामा, सब ने हाथ थामा और मुझे आगे खींचा. ये आसान नहीं होता सदफ.
मेरे कोई पीछे नहीं कोई लोग खड़े थे, फैमिली का सपोर्ट था, मगर मैंने खुद अपने जज्बे से गया, हर बंदे ने हाथ थामा। आज मैं उस शहर को सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ। जब ये लाहौर के अंदर जब लोग आएंगे शहर में, पुराने अंदरूनी शहर में आएंगे, मैं वो म्यूज़िक सुनाना चाहूँगा, वो काम दिखाना चाहूँगा जो लाहौर ने मुझे दिखाया। अब नुसरत साहब की आवाज़ पीछे गूंजेगी, यू नो ताहिरा सैयद की आवाज़, वो खाने की खुशबू जो फूड स्ट्रीट से आती थी, वो क्रिकेट की चेयर होने वाली आवाज़, इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता था हमारे लिए। Those are the things. That's my celebration, and I hope that all comes together like in this I can show. visualize this as he's telling the story. But Sher, you have to tell me, कि इतने थोड़े time. I know 24 years seems great, but from literally going from nothing to where you've come to, with you've tried your hand at TV. You're a designer, of course. You're a public personality. What next? Now. मैं मूवी करने लगा हूँ। हाँ, मैं मूवी करने लगा हूँ। I've just signed my first movie. I'll tell you, you're the first person I'm saying this to. I've never said it anywhere else. I've just signed my first movie. I'm going to be in a movie. मुझे बड़ा शौक है। मैंने कहा वो ये भी कर लेते हैं। You did a cameo, right? No, I've done a cameo. This is a full role. ये पूरा रोल है। मगर क्या है सदफ कि ये जिंदगी में कितने दिन हैं? पैदा होके किसी का माथे पे थोड़ी लगा होता है डिजाइनर, लॉयर, दिस। These are roles that we put ourselves in. We say कि ये हमारा रोल बन चुका है, मगर ये मौका है जिंदगी में जीने का, हर चीज करने का। बहुत से लोग कहते हैं आप ये ना करें, इसको dilute ना करें, ये ना करें। No, I want to live every day, and I want to do the best of what I want to do. I love design, I love fashion. Yes, I love television. I have my talk show. Yes, I love to go public speaking. Yes, I've done radio as well. I used to be a VJ. You remember a radio jockey? Why not? I've done choreography. Why not? I've done movies. Why not? फिर मैं कल politician भी बनना चाहूँगा, मैं कल कुछ भी, मैं astronaut भी बनना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि अगर the sky is the limit. मेरे एक बड़ी saying पड़ी थी, if you reach for the stars, you just might hit a lamppost. I'm reaching for the stars. Wonderful. Well, with that inspiring end to our interview, I am going to thank you so much. Thank you for spending this time with us, and exciting me to know, and like literally within the course of this interview I've made mental notes of at least 5 more things that I want to do. So thank you for being so inspiring. Thank you. Thank you for taking the time. Thank you, and more power to you. You are doing a fantastic job. I'm not just rooting for you and cheering for you, but I'm incredibly taken aback and inspired by you. All the stuff that you're achieving, and this is a great venture. Wonderful. Thanks.